So we are going to continue our discussion on spin. Uh, so in today's class, we are going to have how we have measurements, probabilities, and information which can be associated. फर्स्ट टाइम आईडी क्लास नहीं है नहीं यहाँ नहीं है तो so you have measurements, probabilities, and the information which is associated with what measurements. Measurements is the quantum state, the spin state, and the various probabilities which can be attached or associated with it. अब ये हमारे पास जो probability है, so we had since we studied spin, we had spin polarizations P plus and P minus, which was attached with up and down states. And further, उसमें up and down में भी है ना, they were modulated or modulated by further sigma x, sigma y, sigma in the polyspin matrices. एक तो अपना up and down, plus and minus, and further how we define. And further, how we define them in terms of chi1 and chi2. And chi1, chi2 was C1, C2. And उसका एक अपना density matrix बनता है ना, इसके off diagonal elements भी थे and trace of those. So those terms we could explain. So if we see जो हमारे पास for example density matrix for real valued polarization 3 vector P is जो डेंसिटी मैट्रिक्स इसका है किसके बराबर 1/2 1 plus P dot sigma. और अगर हम इसके अब दो पोलराइजेशन स्टेट्स सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस, सो इट विल बी 1/2 1 plus sigma and the other will be shabash 1/2 1 minus P dot sigma. So which will correspond to eigenvalues P plus will be 1 plus P by 2 and P minus it's 1 minus P by 2. अब you know von Neumann entropy या entropy defined general है ना, entropy कैसे define करते हैं, S is equal to K log W, where log of W क्या है omega by omega naught. It's the evolution of microstate with regard to the whole of the macrostate. ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये है, we have to see this in terms of how the spin polarizations can be seen in that context. तो S अगर हम इसको एक एंट्रोपी का फॉर्म ही है K log W, एक है von Neumann एंट्रोपी, we write it as minus P plus log of P minus P minus log of P minus. You can इसको P plus and P minus you substitute it here, तो हमारा पहला आएगा log of 1/2, it will be log of 1 2, so you can get log of 2 outside, it's 1 plus P log of 1 plus P, and second ये है ना P, ये 1 minus P में आएगा, so it will be plus 1 minus P log of 1 minus P. And जो total probability है हमारे पास P will be given by sigma I is 1 to n pi. So this is simply how we can have the density matrix को हम कैसे लिखेंगे. अब इसका एक एग्जाम्पल है for example if we take 2 cross 2, this is the entropy, von Neumann entropy.
फॉर दीज टू स्पिन पोलराइजेशन स्टेट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब अगर इसका डेंसिटी मैट्रिक्स 2x2 का पोलराइजेशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? सो इट विल बी पोलराइजेशन विल बी इक्वल टू 1/3 if it's along x axis, along y axis, along इसका 3 कंपोनेंट्स. सो इसके 2 पोलराइजेशन हैं और इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स एक्टिंग ऑन दोज स्टेट्स psi. Here the states psi are the quantum spin states. तो अगर again if sigma dot n corresponds to those projection operators, a plus can be defined as 1/2 1 plus sigma dot n, and a minus can be defined as 1 minus sigma dot n. And you can have, if you remember जो डेंसिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या आ रही थी, काय डायग्राम, उसमें हमारे पास पहली एक तो डायगोनल टर्म आई थी a11 plus a22 plus a12 plus a21 के साथ कंजुगेट थी. 4 terms we could get. So if you want to write it in terms of expectation value projection operator in terms of sigma dot n, projection operator is trace of rho of I plus n dot sigma. So you can have 1/2 1, ये है ना I, this is identity matrix पहली वाली टर्म 1 1 आएगा, ये 1 के बराबर आएगा, प्लस इसकी 3 टर्म्स आएंगी सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z. तो इसमें डायगोनल टर्म्स आएंगी एक, यू कैन हैव रो 1 1 माइनस रो 2 2 nz, प्लस एक में आएगा रो 1 2 nx प्लस आयोटा ny, दूसरे में क्या आएगा रो 2 1 या रो 1 2 का कंजुगेट, इट विल बी nx, ये आयोटा ny है, ये ny. And trace of rho will be equivalent to rho 1 1 plus rho 2 2 is equivalent to 1. So you can have projection of this polarization vector can be written as Pn, can be written as this and this plus this. So you can write it as 1/4. इसका फर्दर आप करेंगे ना, इसके बराबर इसका ट्रेस निकालेंगे, 1/2 यहाँ आएगा, इट विल बी 1/4 ट्रेस ऑफ 1 plus p dot sigma into इसका 1 minus 1 plus n dot sigma, or it will be 1/2 1 plus p dot n. अब हमारे पास वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू सी इट इज दैट अगर हमारे पास कोई भी स्पिन पोलराइजेशन स्टेट हो, ठीक है, सो वाया स्टर्न-गेल्ड्राक एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो कोई भी इन अ मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन म्यून प्रोटॉन जो भी है, वी अलाउ इट टू पास थ्रू सम फील्ड. So what sort of spin polarization it's going to take? So that will depend upon जो हमारे पास orientation जो होगी इलेक्ट्रॉन की, the sort of orientation it's going to take, or the sort of values which this projection operator it's going to take, ठीक है, for up state or for down state. ठीक है, so you can have an electron which is coming in a magnetic field, ठीक है, what sort of spin polarization it's going to take, and अगर एक ही नहीं, so what are the subsequent operations अगर हम करेंगे on those quantum states, what are the subsequent states which it's going to take, so for example अगर हमारे पास if we have a molecular beam of
if we have a molecular beam of molecular beam of Stern-Gerlach type, ठीक है, imagine it like that, and it might have spin up state or spin down state. So हम क्या कहेंगे कि a particle interacts with measuring apparatus, So in classical sense, when an observer is going to observe something, it is not going to affect the observer. Okay? But in quantum mechanics, if observer और observed के दरमियान एक interrelation होती है. ठीक है? When you are going to observe, क्योंकि microscopic level पे ये ज़्यादा दिखता है, ठीक है? So it's going to change the measuring apparatus. या observable जो होगा ना, it's going to change the system. तो हम क्या कहेंगे, पार्टिकल इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद बट पार्टिकल कौन सा है, इट्स ए क्वांटम पार्टिकल, इट्स नॉट ए, एंड क्वांटम पार्टिकल में भी हम ले रहे हैं स्पिन पोल, उसकी कौन सी स्टेट, स्पिन पोलराइजेशन कोई भी स्टेट है. तो अब अगर हम लेंगे so if you assume that initially there are no relationship between the spin and the space में जो पोलराइजेशन है उसमें कोई मतलब कोरिलेशन नहीं है, assuming इनिशियल स्टेट हम लेंगे, तो रो इनिशियल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, स्पिन इज द डेंस स्पिन, तो रो में अपना आता है, रो इज बेसिकली काई डायगर, काई C1 C2 स्टार, ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कैन सी इट. सो रो इज स्पिन पोलराइजेशन क्रॉस ऑफ रो ऑफ R and this rho is the purely spatial part of density matrix. Spatial part किसको कहते हैं? It's dependent upon only on the space orientation, है ना, क्या है कहाँ पर. इसी तरह अब इसकी जो रो इनिशियल एंड रो फाइनल की इसकी बोथ पोलराइजेशंस लेंगे, एक प्लस भी लेंगे एक माइनस लेंगे सबस्क्रिप्ट. सो इट कैन बी 1/2 ट्रेस ऑफ, ट्रेस लेते हैं ना वहां पर, ट्रेस पोलराइजेशन, यहाँ पर ट्रेस ऑफ रो स्पिन I is the identity element or 1 plus minus n dot sigma. So plus is for spin polarization up, minus is for spin polarization down. ठीक है, हाँ. अब ये है कि now we are going to observe the interaction of Stern-Gerlach magnet. तो इसको अगर हम इफ आई यूज द, इसका इक्वेशन 148 है बाय द बुक. सो वी आर गोइंग टू यूज interaction of Stern-Gerlach magnet causes the product state, causes this product state to change into more complicated and correlated state. तो इनिशियली हमने ऐसे लिया, स्पेस भी लिया विदाउट एनी इंटरेक्शन. नाउ हम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड से ये जो प्योर स्टेट है ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. इट्स बीइंग interconnected, it's somehow interrelated with magnetic field also, or interconnected with the magnetic part of the field. तो रो फाइनल जो हमारे पास, ये रो इनिशियल है, रो फाइनल हमारे पास जो आएगा, इट विल कम आउट टू बी पोलराइजेशन ऑफ I प्लस n डॉट सिग्मा. तो ये इसका हम कहेंगे रो अप स्टेट और R पॉइंट. तो अभी इसका वंस वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, ये है ना रो,
खाली रो था, नाउ इट बिकम्स रो अप। द मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करने के साथ जो ये रो है स्पेस, इट विल टेक सम पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, so it will take row up for one state, and the other one it will be, this is for spin polarization n, for minus n it's going to take 1 minus n dot sigma। एक तो ये है, ये आइडेंटिटी है, ये I plus n dot sigma minus n dot sigma, and rho shabash it will be down, rho down or where rho and rho are rho up or prime and rho down or prime or shabash or spatial density matrix that describe two different particle beams, है ना। एक particle beam की after in presence of magnetic field it will have orientation ऊपर जाएगी, दूसरी की नीचे जाएगी, ठीक है। So this is it, and what further they are said to be correlated। correlated is a better term, quantum mechanics में आप यूज करते हैं word correlated systems, yeah, yes। So we can say rho up is correlated with spin state +1, and rho down is correlated with spin state -1। अब इसमें ये है कि if I want to draw a diagram, the thing is that जिस तरह हमारे पास है ना projection operator is an operator, normally it will flip the state back, जिस तरह I didn't put to its original states। हमारे पास अगर series of एक state है, up operation हो गया, now again it passes through magnetic field again, so you have a series of operations by which this spin state of an electron or a quantum particle to be precise, it passes through a field, how it's going to change in subsequent states, तो हमको directions का ख्याल रखना है। For example, अगर हमारे पास if I write it successive Stern-Gerlach measurements हम कैसे कर सकते हैं। So अगर हमारे पास रो डेंसिटी मैट्रिक्स है, it's like this n1 dot sigma, तो एक तो यहाँ से जाएगी pn, so I'll write it down, so it will be n1 dot sigma 1/2 pn1 1 plus n1 dot sigma, तो यहाँ पर 1/2 pn1 minus n1 dot sigma, ये हो गया up state and down state। Now we are going to apply further इसी को n2 dot sigma, इस स्टेट को हम further will pass it through some other magnetic field, ठीक है। So what will happen to this, यहाँ तो दो कंपोनेंट्स थे ना, अब इस कंपोनेंट को करेंगे, so again it will become, ये 1/2 का फैक्टर है ना, ड्यू टू चेंजिंग ड्यू टू इसका 1/2 के साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा पोलराइजेशन के साथ। सो इट विल बी 1 plus n1 dot n2। अब यहाँ n2 है ना, सो इसका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट विद द जो डिफरेंट फील्ड, नया फील्ड आया उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर 1 plus n2 dot सिग्मा आएगा, एक आएगा ऐसे एंड दूसरा आएगा ऐसे, pn1 dot 1 minus n1 n2 dot 1 minus n2 dot sigma, ठीक है। Now again we can have this thing further, इसका करेंगे n1 dot sigma, so again, तो ये again you will have a factor of 1/2 here, it will be 1/2,
8, ये मान लो 2 फैक्टर आता है कॉन्स्टेंट के साथ, because we have applied an operation on this. This part is pre-factor of it. It gets multiplied after every operation. ठीक है? So it will become 1 by 8. 1 plus n1 dot n2. अब ये इसका स्क्वायर आएगा इस ऑपरेशन का. 1 plus n1 dot sigma. तो नीचे वाला आएगा वही आएगा, बट सिर्फ इसमें यहाँ n1 dot sigma आएगा, बाकी सेम आएगा 1 by 8 1 minus n1 n2. So the point is the point is how can these are the different states. Yes, that's it. अब ये है अगेन इन क्वांटम मैकेनिक्स हम क्या कहते हैं काम, जब हम स्टेट्स करते हैं ना डिस्क्राइब इन क्लासिकल मैकेनिक्स यू कैन नो एग्जैक्टली वेयर द पार्टिकल इज एंगुलर मोमेंटम. जैसे x py माइनस py x है ना, ये इसका z कंपोनेंट में इसका कंपोनेंट आएगा. ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जीरो आता है, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स में ये जीरो नहीं आता है, because two canonically conjugate measurements on two parameters, you cannot simultaneously measure them. It comes out to be IXI, iota ph z. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या क्वांटिटी है ना, क्लासिकली एंगुलर मोमेंटम है ना mvr, ये p डॉट r ही आएगा है ना, m is p. So you cannot canonical conjugate variables जो हमारे पास है दो क्वांटम मैकेनिक्स में. ठीक है, सो इन दो का अगर हम एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है इट विल बी इन द थर्ड डायरेक्शन. आप क्वेश्चन यहां पर ये थर्ड डायरेक्शन में जो होगा ना, विल इट बी एग्जैक्ट और नॉट, विल इट बी एग्जैक्ट और, जैसे इन दो अगर हमारे पास जो इनकमिंग पार्टिकल है वो आ रहा है उसका एक्स वाई डायरेक्शन है, पोलराइजेशन है, इसकी पोलराइजेशन अंडर फील्ड इट विल बी पीजेड. अगर एक्स वाई में है इसकी पोलराइजेशन होगी पीजेड में होगी ना, इन प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड. Magnetic field means it will a sort of operator is going to act on that state, quantum state psi. So incoming particle आ रहा है तो spin polarization कोई होगी particle, ठीक है, in the z direction. अगर x y plane में है इसकी polarization होगी z direction में. अब क्वेश्चन ये है कि z direction में कितना, can we exactly determine कहां पर z है. So there we can say there is the limitations of uncertainty principle, that we cannot canonically conjugate variables. Canonically conjugate variables क्या कहते हैं हम शाबाश. So if we have AB minus BH is equal to, ये commutator हम classically define करेंगे, we can simultaneously measure two observables exactly. इसको कहते हैं commuting measurements, commuting observables. इन क्वांटम मैकेनिक्स इसका वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं आ रहा है, इट कम्स आउट ही, सो दैट्स वी टॉक ऑफ नॉन कम्यूटिव ऑपरेटर्स. सो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर ये है कि जो एंगुलर मोमेंटम एज ए क्वांटिटी है या स्पिन पोलराइजेशन स्टेट्स या स्पिन गर्लाग, इवन दो वी कैन डिटरमाइन किस डायरेक्शन में इसका स्पिन और अप हो गया है, बट वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन कि इसका एग्जैक्टली आइगन स्टेट्स कहाँ लाई करेगा उस स्पेस में. So it can be series of eigenvalues या eigenvalues for different eigenstates. कौन सा eigenvalue आएगा? That's the point. So इसी को that's why we call them two observables are compatible if they are if the Hermitian matrix representing them commute, if they commute, and if sigma z and sigma y are incompatible if they do not commute. Do not commute. So two separate copies of the system have to be used. Two separate copies has to be used. अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है आज की डेट में, what is quantum reality and what is classical reality. ठीक है, it comes कि जो हमारा मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट, आवर मेजरमेंट
induces value to what we are going to observe. हम क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का स्पिन पोलराइजेशन वैल्यू, दैट डिपेंड्स हम मैग्नेटिक फील्ड की क्या ओरिएंटेशन, उसी हिसाब से अप लेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड तरफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है ना, एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन विल हैव दिस। इस तरह हमारे जो ऑपरेटर है मैग्नेटिक फील्ड का एंड स्पिन पोलराइजेशन क्या आएगी, अप लेगा डाउन लेगा। सो हमारा आइगन वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आइगन स्टेट पे क्या ऑपरेट हुआ है। सो आवर मेजरमेंट इंड्यूसेस वैल्यू टू द ऑब्जर्वेबल, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी को कहते हैं समटाइम्स इसको कहते हैं हम आइडियल मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट काइंड। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये नहीं था, ऑब्जर्वर की मेजरमेंट डिटरमाइन नहीं करता था व्हाट यू आर गोइंग टू गेट मेजर्ड। सो हियर आवर मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, व्हाट वी आर गोइंग टू मेजर। सो इसी चीज को हम जो फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं, देयर इज समथिंग व्हिच यू माइट study or which you might later know. So it's a big debate in the quantum mechanical when you study quantum mechanics. What is observer, what is reality and what is measurement? तीन चीजें है ना। पहले ऑब्जर्वर आता है, फिर मेजरमेंट आता है, फिर रियलिटी, मतलब आपने क्या देखा या व्हाट यू एट द एंड कंस्ट्रूड। तो ऑब्जर्वर कैन बी क्लासिकल ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कैन बी इन क्लासिकल ऑब्जर्वर में मेजरमेंट पे फर्क नहीं पड़ता फॉर ऑल सेट ऑफ, कोई भी ऑफ स्टेट एंसेंबल वो ऑब्जर्वर एंड व्हाट मेजरमेंट विल नॉट चेंज फ्रॉम एंसेंबल टू एंसेंबल, ठीक है। यहाँ एक उसी एंसेंबल को आप एक तरीके से तो विल गेट अप स्टेट या डाउन स्टेट, ठीक है। एंड व्हाट इज द रियलिटी कम्स ट्रू आउट ऑफ इट। इसी को हम कहते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट वी कॉल दिस थिंग, क्योंकि जो हमारे पास स्टेट था ना बिफोर द डेंसिटी मैट्रिक्स, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट स्पेस, इट्स अ कोरिलेटेड स्पेस। जो डेंसिटी मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया ना, रो अप, रो को रो आर प्राइम को हमने डिफाइन किया रो अप आर प्राइम प्लस रो डाउन आर प्राइम। सो इट्स अ कोरिलेटेड स्टेट। दो स्टेट जो है ना ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इट्स अ कोरिलेटेड स्टेट। एंड कोरिलेटेड स्टेट जो है व्हाट आई शुड से, so the acquisition of information and the subsequent measurement on the correlated state which has components with definite probabilities, इसी को हम कहते हैं reduction of the state, reduction of state, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कहते हैं कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन। कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन मतलब ये नहीं कि वेव फंक्शन खत्म हो गया के ऊपर, इट हैज कोलैप्स्ड टू सम रियल वैल्यू व्हिच द मेजरमेंट इज इंड्यूसिंग ऑन इट। हमारा मेजरमेंट है ना, द सॉर्ट ऑफ किस मैग्नेटिक फील्ड में आपको डालोगे उसके हिसाब से इट विल इंड्यूस अप स्पिन और डाउन स्पिन ऑफ दैट कोरिलेटेड स्टेट। सो आवर मेजरमेंट जीरोज इट, इसको कहाँ की तरफ ले रहा है। सो यहाँ कोई पार्टिकल इसके 10 यहाँ भी जा सकता है, वहां भी जा सकता है, यहाँ प्लस की। बट क्वांटम मैकेनिकली व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग इट्स गोइंग टू, इसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ द स्टेट वेक्टर, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू, द आइगन वैल्यू, इट्स गोइंग टू टेक ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू। मैंने आइगन स्टेट उसकी की है इसका वन वी आर गोइंग टू ऑपरेटर लगाते हैं, इट इज गोइंग टू टेक ए पर्टिकुलर आइगन वैल्यू, ठीक है। और इट्स गोइंग टू हैव ए रिडक्शन ऑफ ए स्टेट, और इट्स गोइंग टू, इसको हम कहते हैं कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन बी। हाँ, ओनली द हाँ। अब इसका मतलब ये है कि
प्रोविजो दिस थिंग कि अगर वही स्टेट को हम इवन दो इट हैज टेकन, इसका मतलब ये नहीं कि देयर इज सम सब्जेक्टिविटी, देयर आर टू इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये है कि उसी स्टेट को हम अगर डिफरेंट ये मेजरमेंट करेंगे, इट शुड गिव आफ्टर सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स और डिफरेंट मेजरमेंट्स दैट इट शुड कोलैप्स टू द सेम वैल्यू इन प्रिंसिपल, अब इसमें ये है कि दिस बुक, अगर इसका आप लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये इसने थोड़ा सा इशारतन किया। इशारतन समझते हो? इशारतन he has only hinted because it's a basically debate in quantum mechanics, what is observer, what is reality, and तो अब इसमें है कि when you say probability means there is some subjectivity associated with it. So the measurement जो state of observer है ना, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, हाउ ही मेजर्स, हाउ ही फिल्टर्स प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस इसके बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। बट वंस यू से कि इसका ऑब्जर्वर का आफ्टर मेजरमेंट एक ही वैल्यू आ गया, तो यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है ना। इफ यू इंड्यूस द आइडियाज ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी की भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन है विच इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंटिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। मतलब आपने एक ऑब्जर्वेबल देखा, जैसे यहाँ आपके कमरे में इसकी 5 फीट हाइट है, इसकी 6 फीट हाइट है, इसकी 7 है, इसकी 5.6 है, वी आर गोइंग टू एवरेज इट बाय डिवाइड बाय 7, ऐसी तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटिस्टिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। बट वंस यू हैव मेजरमेंट, कुछ डेफिनेट वैल्यू आता है ना यहाँ पर राइट हैंड साइड में, यहाँ जब ऑब्जर्वर मेजरमेंट करता है उसे द रिडक्शन, इट हैज रिड्यूस्ड टू सम रिडक्शन ऑफ द स्टेट, और द वेव फंक्शन हैज कोलैप्स्ड टू ए गिवन वैल्यू, और वी हैव जीरोड इट टू गिवन वैल्यू। सो यू हैव समहाउ ट्राइंग टू, इसमें दो बातें निकलती है। एक बात निकलती है इधर द रियलिटी, टोटल रियलिटी जो हमारे पास है, which we are observing, the quantum reality, it's somehow it is basically the individual probabilities as well as after measurement together. This is or other part of it is that we have not been able to reconcile these two approaches, the probabilistic approach and or we have not been able to जो एक होगी qualitative aspect and the other is the quantitative aspect of the thing. Quantitative aspect हो गया you can get some value measured value. Qualitative aspects हो गया कि we have a subjective interpretation of something, ठीक है। Subjective interpretation means how you क्या होने जा रहा है वहां पर, ठीक है। We are not certain, we are certain इसके वैल्यू ये आए, सीरीज ऑफ वैल्यूज हमारे पास, हमको नहीं पता है कौन सा वैल्यू हो सकता है, हम कहेंगे एवरेज ये आएगा। बट टू डिटरमाइन इट यू हैव टू डू एन एक्सपेरिमेंट, क्वांटम एक्सपेरिमेंट। बट क्वांटम एक्सपेरिमेंट क्या करेगा, इट इज गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ दैट वेव फंक्शन, इट्स गोइंग टू रिड्यूस इट इनटू सडन, इट्स गोइंग टू कोलैप्स इट और इट्स सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू। अब आपके पास क्वेश्चन जाता है कि जो उस स्टेट का वैल्यू था वो सीरीज ऑफ वैल्यूज था कि वही एक ही वैल्यू था बिफोर मेजरमेंट। सो इट बिकम्स अ बिट, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो जाता है कुछ। सो बिफोर मेजरमेंट इफ यू अज्यूम इसके इट कैन टेक एनी वैल्यू, बट वंस यू आर गोइंग टू मेजर इट, इट विल ओनली टेक इट वन वैल्यू, जिसको हम रिडक्शन ऑफ दैट स्टेट। सो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या था, सो इसको हम अंग्रेजी में इफ आई यूज द वर्ड कैन ऑफ वर्म्स समझते हो। So it will open up big debate in quantum mechanics. How we can interpret quantum reality, or what are the foundations of quantum mechanics? What is observer? What is measurement? And what is quantum reality? ठीक है? So we'll stop here. Sure.